Hello friends, hope you are good. So I was facing a problem from last many days that I was not able to use the global variables in the URL with the static path or static text, and then also I have the variable global variable after that is static path. So I was not able to do this, and I have searched many videos, but it was not appropriate. I was not able to do that, so I have done it my own. And what you have to do is, for example, you have google.com in the global variable, you have abc in that, which is static, and username is again it is the from global variable. So you can do that. So you have to write down this global variable whenever you are going to use this variable with the static path. You have to write down it in with dollar and curly braces, and the double quotes are there. Plus sign is used to concat this, and slash static path, this is a static path I have write, which is in single quote. And then again plus it was a state again the variable, so I have to write this in the same way. So I have written down this all, and it works fine. So I hope you will like this. अगेन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसको कि आप इसको नेविगेट करने के लिए आपको जाके वेब डॉट नेविगेट, इसमें हम जानते हैं कि यूआरएल होता है कोई भी, तो यूआरएल का मेरा पहला पार्ट जो है डोमेन, वो भी मेरा बाहर से आ रहा था ग्लोबल वेरिएबल से। ये स्टैटिक पाथ है जो था ही उसमें हमेशा रहेगा ही, और ये वाला जो है यूज़र नेम वाला, ये भी वापस ग्लोबल वेरिएबल से आ रहा था। तो इसके लिए क्या किया मैंने कि डबल कोट्स के अंदर जो है ग्लोबल वेरिएबल को कॉल कर लो, लेकिन डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फिर प्लस साइन यूज़ करके सिंगल कोट्स के अंदर जो स्टैटिक लिखना है वो स्टैटिक लिख दो, फिर प्लस साइन का यूज़ करके फिर डॉलर के साथ ये कर्ली ब्रेसेस में इसको ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर लो, सिंपल। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।